ছোৱালী ডাঙৰ ডাঙৰ অফিচাৰ হ'ব লাগিব, ভালদৰে পঢ়ক, ডাঙৰ ডাঙৰ অফিচাৰ হওক, IAS IPS হৈ দেখুৱাই দিয়ক। সদায় কি ৰিক্সা চালক, ঠেলা চালক, পাচলি বেপাৰী হৈ থাকিব নেকি? মুছলমান ল'ৰা ছোৱালীয়ে কৰো বুলিলে কি কৰিব নোৱাৰে? পঢ়ি শুনি ডাঙৰ মানুহ হৈ দেখুৱাই দিয়ক মুছলমান ঘৰৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে। সকলো মুছলমানৰ বাবে এই বিশেষ আহ্বান জনাইছে নীতিন গাডকাৰীয়ে। নীতিন গাডকাৰীয়ে ক'লে যে মুছলমান সমাজৰ সকলো ল'ৰা ছোৱালী ডাঙৰ ডাঙৰ অফিচাৰ হৈ দেখুৱাই দিব লাগিব। অনবৰতে সকলো ক্ষেত্ৰত মুছলমানবোৰ কিয় সৰু হৈ থাকিব লাগে? ৰিক্সা চালক, ঠেলা চালক, অটো চালক হৈ কিয় থাকিব লাগে? পাচলি বেপাৰী হৈ কিয় থাকিব লাগে? তেওঁলোকৰ ঘৰৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে পঢ়ক, নামাজ যেনেকৈ আপোনালোকে পঢ়ে, পঢ়া কিতাপো পঢ়ক। 100 বাৰ মছজিদত নামাজ পঢ়াতকৈ পঢ়া শুনাটো গুৰুত্ব দিয়ক, ডাঙৰ মানুহ হৈ দেখুৱাই দিয়ক, সমাজত ডাঙৰ মানুহ হৈ থিয় হওক মুছলমান ঘৰৰ ল'ৰা ছোৱালী। এই বিশেষ আহ্বান জনাইছে নীতিন গাডকাৰীয়ে। সবিচাৰি লৈ আহিছো এই খবৰটো, এই মুহূৰ্তৰ এটা ডাঙৰ খবৰ। মুছলমানৰ ল'ৰা ছোৱালীক ডাঙৰ হ'বলৈ আহ্বান জনাইছে নীতিন গাডকাৰীয়ে। ডাঙৰ ডাঙৰ অফিচাৰ হ'ব লাগিব বুলি ক'লে মুছলমান ঘৰৰ ল'ৰা ছোৱালীক পঢ়ি শুনি IAS IPS অফিচাৰ হওক বুলি আহ্বান জনাইছে নীতিন গাডকাৰীয়ে। নীতিন গাডকাৰীয়ে ক'লে যে কেৱল ৰিক্সাৱালা, শাক পাচলি বেপাৰী, ঠেলাৱালা, চাহ দোকানী হৈ থাকিলেতো নহ'ব। মুছলমানসকল কিমান দিন সৰু হৈ থাকিব? ডাক্তৰ, ইঞ্জিনিয়াৰ হওক, তাৰ বাবে ভালকৈ পঢ়ক, ডাঙৰ ডাঙৰ অফিচাৰ হৈ দেখুৱাই দিয়ক মুছলমান ঘৰৰ ল'ৰা ছোৱালী। মুছলমান কি সদায় সৰু হৈ থাকিব নেকি? এই কথা উল্লেখ কৰিছে নীতিন গাডকাৰীয়ে। নীতিন গাডকাৰীয়ে ক'লে কৰো বুলিলে কি কৰিব নোৱাৰি, পঢ়ি শুনি দেখুৱাই দিয়ক, সমাজত ডাঙৰ মানুহ হৈ দেখুৱাই দিয়ক মুছলমান ঘৰৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে। মছজিদত 100 বাৰ নামাজ পঢ়িলেই নহ'ব। মছজিদত যেনেকৈ নামাজ পঢ়ে, পঢ়া কিতাপো পঢ়ক, ডাঙৰ মানুহ হওক, পঢ়া কিতাপ পঢ়ি ডাঙৰ মানুহ হৈ দেখুৱাই দিয়ক মুছলমান ঘৰৰ ল'ৰা ছোৱালী। এই বিশেষ আহ্বান জনাইছে নীতিন গাডকাৰীয়ে। নীতিন গাডকাৰীয়ে ক'লে যে ডাঙৰ ডাঙৰ অফিচাৰ হওক আপোনালোক। মুছলমানক লৈ নীতিন গাডকাৰীৰ ডাঙৰ মন্তব্য। তেওঁ উল্লেখ কৰিছে যে সদায় সংখ্যালঘু হৈ থাকিব নেকি? সদায় সৰু হৈ থাকিব নেকি? সদায় কি ঠেলাৱালা, ৰিক্সাৱালা সৰু সৰু কামবোৰ কৰিব নেকি? মুছলমান ঘৰৰ ল'ৰা ছোৱালী ডাঙৰ ডাঙৰ অফিচাৰ হ'ব লাগিব। ইতিমধ্যে বহু লোক ডাঙৰ ডাঙৰ অফিচাৰ হৈ দেখুৱাই দিছে। মুছলমানক বহু লোকে ইতিমধ্যে গৌৰৱান্বিত কৰিছে। আজি লণ্ডন পৰ্যন্ত পাইছে মুছলমানৰ ল'ৰা ছোৱালী। মুছলমানৰ ল'ৰাই আজি পাইলট হৈছে। কেৱল ৰিক্সাৱালা, ঠেলাৱালা, শাক পাচলি বেপাৰী, চাহ দোকানী হৈ থাকিলে নহ'ব মুছলমানসকল। ডাঙৰ ডাঙৰ ইঞ্জিনিয়াৰ, ডাঙৰ ডাঙৰ ডাক্তৰ, ডাঙৰ ডাঙৰ অফিচাৰ হৈ দেখুৱাই দিয়ক। IAS হওক, IPS হওক। মুছলমানে সদায় কি সৰু হৈ থাকিব নেকি? এই প্ৰশ্ন কৰিছে নীতিন গাডকাৰীয়ে। নীতিন গাডকাৰীয়ে ক'লে সমাজত ডাঙৰ মানুহ হওক মুছলমান ঘৰৰ ল'ৰা ছোৱালী, পঢ়ি শুনি দেখুৱাই দিয়ক সমাজত ডাঙৰ মানুহ হৈ। নীতিন গাডকাৰীয়ে বিশেষ মন্তব্য কৰিছে মুছলমানসকলক লৈ। মছজিদত 100 বাৰ নামাজ পঢ়িলেই নহ'ব, নামাজ যেনেকৈ পঢ়ে তেনেধৰণে আপোনালোকে পঢ়া কিতাপো পঢ়ক আৰু ডাঙৰ মানুহ হৈ দেখুৱাই দিয়ক বুলি ক'লে নীতিন গাডকাৰীয়ে। নীতিন গাডকাৰীয়ে ক'লে ডাঙৰ ডাঙৰ অফিচাৰ হওক, সমাজত আগশাৰীত স্থান লওক, সমাজত আগশাৰীত স্থান লৈ সমাজখন আগুৱাই নিয়ক। মুছলমান লোকসকল আগুৱাই আহক, পিছ পৰি নাথাকিব, সেই কথা কৈছে নীতিন গাডকাৰীয়ে। নীতিন গাডকাৰীয়ে কৈ দিলে ডাঙৰ ডাঙৰ অফিচাৰ হৈ দেখুৱাই দিব লাগিব মুছলমান ঘৰৰ ল'ৰা ছোৱালী। সদায় কি সৰু হৈ থাকিব নেকি মুছলমান ঘৰৰ ল'ৰা ছোৱালী? পঢ়ক, শুনক, ডাঙৰ মানুহ হওক, IAS IPS হৈ দেখুৱাই দিয়ক, ডাক্তৰ হওক, ইঞ্জিনিয়াৰ হওক, সমাজত আগশাৰীৰ যিমানবোৰ পষ্ট আছে সেইবোৰত মুছলমানৰ ল'ৰা ছোৱালী আহক। কেৱল ৰিক্সাৱালা, শাক পাচলি বেপাৰী, ঠেলাৱালা, চাহ দোকানী হৈ থাকিলেই নহ'ব। ভালে ভালে পঢ়ক, ডাঙৰ ডাঙৰ ডাক্তৰ হওক, ডাঙৰ ডাঙৰ ইঞ্জিনিয়াৰ হওক, IAS অফিচাৰ হওক, IPS অফিচাৰ হওক, সমাজত ডাঙৰ ডাঙৰ স্থানবোৰ লওক। মুছলমান কি সদায় সৰু হৈ থাকিব নেকি? প্ৰশ্ন কৰিছে নীতিন গাডকাৰী। নীতিন গাডকাৰীয়ে আহ্বান জনাইছে মুছলমান সমাজৰ বাবে পঢ়ি শুনি দেখুৱাই দিয়ক সমাজত ডাঙৰ মানুহ হৈ। তেওঁ কি মন্তব্য কৰিলে এই মুহূৰ্তত শুনাব বিচাৰিছো। मैंने नागपुर के अंजुमन इस्लाम को दिया, तो मुझे पूछा कि इनको क्यों दिया? तो मैंने कहा हमारे समाज में सबसे ज्यादा आवश्यकता कही है शिक्षा की तो मुस्लिम समाज में है। दुर्भाग्यवश यह है कि 5 ही धंधे समाज में लोकप्रिय है: चाय की टपरी, पान ठेला, कबाड़ी का दुकान, ट्रक ड्राइवर और क्लीनर। पर हमारे समाज में से अगर इंजीनियर, डॉक्टर, वकील, IAS IPS ऑफिसर बनेंगे तो ही समाज का विकास होगा। और इसलिए हम मस्जिद में 1 बार नहीं 100 बार नमाज पढ़ें। पर विज्ञान और तंत्र विज्ञान को अगर हम आत्मसात नहीं करेंगे तो हमारा भविष्य क्या होगा? आज डॉक्टर अब्दुल कलाम साहब जब न्यूक्लियर साइंटिस्ट बने और उन्होंने ऐसा काम किया कि आज डॉक्टर कलाम साहब का नाम हमारे देश में नहीं विश्व में सबके पास पहुंचा है। और इसलिए मैं एक बात पर विश्वास रखता हूं कि कोई भी व्यक्ति उसकी जात, पंथ, धर्म, भाषा और सेक्स से बड़ा नहीं होता, उसके गुणों से बड़ा होता है। और इसलिए हम जात, पंथ, धर्म, भाषा और सेक्स के आधार पर किसी को डिस्क्रिमिनेट नहीं करें। मैंने नागपुर के अंजुमन इस्लाम को दिया,
तो मुझे पूछा कि इनको क्यों दिया, तो मैंने कहा हमारे समाज में सबसे ज्यादा आवश्यकता कही है शिक्षा की तो मुस्लिम समाज में है। दुर्भाग्यवश यह है कि पांच ही धंधे समाज में लोकप्रिय है, चाय की टपरी, पान ठेला, कबाड़ी का दुकान, ट्रक ड्राइवर और क्लीनर। पर हमारे समाज में से अगर इंजीनियर, डॉक्टर, वकील, आईएएस, आईपीएस ऑफिसर बनेंगे तो ही समाज का विकास होगा। और इसलिए हम मस्जिद में एक बार नहीं 100 बार नमाज पढ़े, पर विज्ञान और तंत्र विज्ञान को अगर हम आत्मसात नहीं करेंगे तो हमारा भविष्य क्या होगा। आज डॉक्टर अब्दुल कलाम साहब जब न्यूक्लियर साइंटिस्ट बने और उन्होंने ऐसा काम किया कि आज डॉक्टर कलाम साहब का नाम हमारे देश में नहीं विश्व में सबके पास पहुंचा है। और इसलिए मैं एक बात पर विश्वास रखता हूं कि कोई भी व्यक्ति उसकी जात, पंथ, धर्म, भाषा और सेक्स से बड़ा नहीं होता, उसके गुणों से बड़ा होता है। और इसलिए हम जात, पंथ, धर्म, भाषा और सेक्स के आधार पर किसी को डिस्क्रिमिनेट नहीं करें। मैंने नागपुर के अंजुमन इस्लाम को दिया, तो मुझे पूछा कि इनको क्यों दिया, तो मैंने कहा हमारे समाज में सबसे ज्यादा आवश्यकता कही है शिक्षा की तो मुस्लिम समाज में है। दुर्भाग्यवश यह है कि पांच ही धंधे समाज में लोकप्रिय है, चाय की टपरी, पान ठेला, कबाड़ी का दुकान, ट्रक ड्राइवर और क्लीनर। पर हमारे समाज में से अगर इंजीनियर, डॉक्टर, वकील, आईएएस, आईपीएस ऑफिसर बनेंगे तो ही समाज का विकास होगा। और इसलिए हम मस्जिद में एक बार नहीं 100 बार नमाज पढ़े, पर विज्ञान और तंत्र विज्ञान को अगर हम आत्मसात नहीं करेंगे तो हमारा भविष्य क्या होगा। आज डॉक्टर अब्दुल कलाम साहब जब न्यूक्लियर साइंटिस्ट बने और उन्होंने ऐसा काम किया कि आज डॉक्टर कलाम साहब का नाम हमारे देश में नहीं विश्व में सबके पास पहुंचा है। और इसलिए मैं एक बात पर विश्वास रखता हूं कि कोई भी व्यक्ति उसकी जात, पंथ, धर्म, भाषा और सेक्स से बड़ा नहीं होता, उसके गुणों से बड़ा होता है। और इसलिए हम जात, पंथ, धर्म, भाषा और सेक्स के आधार पर किसी को डिस्क्रिमिनेट